Hello everyone, welcome to Commodities Podcast. This is Rakesh Khanna from Mirae Asset Sharekhan. Today we have an update on crude oil. Despite a positive close of plus 1.75% in today's trading session, the overall short-term trend remains bearish as indicated by lower highs and lower low formation in a falling channel. The price is currently hovering near the upper channel resistance at Rs 6,380 level. If the price fails to hold above this level, it may indicate a bearish continuation. The crucial support is at Rs 6,260 level. A breach below this level could lead to further declines till Rs 6,200 and Rs 6,050 level in near term. On the upside, significant resistance is identified at Rs 6,520 level. The MACD indicator has shown negative crossover while remaining below center line, reinforcing the bearish momentum in upcoming trading sessions. Thank you. नमस्ते, मैं राकेश खन्ना मिराए एसेट शेरखान की तरफ से आप सबका कमोडिटी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज जिस कमोडिटी की जानकारी देने जा रहा हूं वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल प्राइस ने आज के ट्रेडिंग सेशन में प्लस 1.75% की बढ़त के साथ पॉजिटिव क्लोज दिया है। क्रूड ऑयल प्राइस फॉलिंग चैनल में लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन के साथ मूव कर रहा है, जिससे ये पता लगता है कि ट्रेंड बेरिश है। क्रूड ऑयल प्राइस ने अपने अपर चैनल बैंड के रेजिस्टेंस Rs 6,380 लेवल को टेस्ट किया है। अगर क्रूड ऑयल प्राइस Rs 6,380 लेवल के ऊपर सस्टेन होने में असफल रहा है तो नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट Rs 6,260 लेवल पर है। अगर ब्रेक करता है तो Rs 6,200 और Rs 6,050 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है। ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस Rs 6,520 लेवल पर है। अगर ब्रेक करता है तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। MACD इंडिकेटर ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, जिससे ये पता लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बेरिश मोमेंटम देखा जा सकता है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.